sorry, and Sweta. Oh, thank you. टाइगर हाँ, और ये टाइगर जी है लुधियाना में, ये रैली लगाते हैं खुद भी और ये अपना अनुभव बताएंगे। महावीर जी है, ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनका, इनको इसको कहते हैं। ये उस्मान है जो सड़क पे जो अर्थव्यवस्था चलता है उसके बहुत बड़े विद्वान है, ये अपना अनुभव बताएंगे आपको। और सुब्रा जी हैं जिनके साथ मिलके हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, तो सुब्रा जी भी अपना ज्ञान हमें देंगी। तो हम लोग कमरूल से स्टार्ट करेंगे एंड रिक्वेस्ट यू टू बी शॉर्ट एंड आई ट्रांसलेट फॉर यू। Okay, so I'll speak sentence by sentence. Yes. Okay. Hello, I'm very happy to be here. And today I will share a story of... Oh, I'm sorry. Okay. I am happy to be here. I am from Turkey and I'm an academician. I am going to share today a very inspiring story of Adnan Akbaş, a recycling factory owner in Turkey, Mersin. मैं टर्की से हूँ और यहाँ आके बहुत खुश हूँ और मैं एक प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपको अदनान का कहानी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रिसाइकलर है, बहुत ही प्रसिद्ध कचरा प्रबंधन का काम करते हैं वहाँ पे टर्की में। Adnan was born in an eastern part of Turkey. Of course, he was not with disadvantaged background. He was not coming from an advanced background. अदनान का जन्म टर्की के ईस्ट में हुआ था और वो एक साधारण बैकग्राउंड से, कोई पैसे वाले बैकग्राउंड से नहीं थे। So he started at age 15, collect papers, waste products from the streets and sell them to earn his life. वो 15 साल के उम्र से कचरा ये कागज चुनते थे अपना जिंदगी चलाने के लिए। He continued for a long time, picking up waste, picking up papers and those kind of stuff. And around age 20, he started collecting them. So he made one step up. He opened up a little hub and started collecting papers there. So the other people was working for him to collect paper and waste products from the streets now. 15 साल के उम्र में वो कचरा चुनना चालू किए, मगर 20 साल का जब वो हुए तो वो अपना एक सेंटर खोले और दूसरे लोग भी जो है उनके लिए काम करना चालू किए। And from collecting papers, he went up one more step ahead and he started up a little factory, and this time he started to process the waste products that come into him. और कुछ साल बाद वो एक फैक्ट्री भी खोले और जो कचरा उनके पास आता था उसका वो कुछ सामान बनाने लगे। And now in Mersin, he has one of the biggest recycling factories in Turkey, and I believe, I think in Europe. आज के दिन में वो टर्की का एक सबसे बड़ा रिसाइकलिंग का फैक्ट्री है और इनके अनुसार पूरे यूरोप महादेश में सबसे बड़ा फैक्ट्री उनके पास है। He has over 100 people working for him now in his factory, and also he arranged a bunch of waste pickers around Mersin districts. So 4 different districts from Mersin, waste collectors collect all the waste, paper, glass and other for him, that he collects them in his factory. और वो करीब 100 लोग उस फैक्ट्री में काम भी करते हैं और वो 4 शहरों का जो कचरा होता है उन्होंने वेस्ट पिकर के माध्यम से उनके लिए वो इकट्ठा करते हैं। And after he collects them, he also processes them to produce raw materials so that those materials can be used in industry. So
और वो जो कचरा इकट्ठा होता है उससे कुछ ऐसे सामान बनाते हैं जो कि दूसरे कारखानों में काम आता है। So he works in both ways. He both makes use of those waste materials. He also, in the second time, he makes them usable for industry. तो वो दोनों तरीके से काम करते हैं, एक तो कचरा को इकट्ठा करते हैं और दूसरा वो ऐसे सामान बनाते हैं जो अन्य उद्योगों में काम आता है। And he still is in the process of making his factory even better. He is using the up-to-date German materials in his factory. So his factory is all technological, in the latest up-to-fashion technology he is using. और वो अपने फैक्ट्री में जो एकदम अच्छा तकनीक होता है, अच्छा टेक्नोलॉजी होता है, अच्छा मशीन होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। And he also, I mean, what is inspiring about him is the story that he came from the bottom of the street to the top of the city. But he connects the bottom of the street with the top of the city very well, and he doesn't forget his background. और वो इतना आगे बढ़े मगर वो अपना बैकग्राउंड जो है, अपना पास्ट जो है, अपना बीती हुई कहानी अपना नहीं भूलते हैं। And he also gives us a good example of a street waste picker is a voluntary environmentalist. और वो एक अच्छा उदाहरण भी है कि कैसे एक कचरा चुनने वाला एक पर्यावरण का लिए काम करता है। Because they pick up those waste products that we, the city developers, just threw up without thinking about it, and they make them usable again. And Adnan is one of the milestones there that helps it. It's in the center of this connection. And also, I need to add that he came to the conference that Osman Sirkeci arranged in Malta in the first International Street Economics Conference. And what happened there, he shared his story, and with the help of Osman Sirkeci, he made arrangements with Malta. Now he is in the process of cleaning up Malta's waste products here in Turkey. And also, again, with the help of Osman Sirkeci again, he is in the process of cleaning up Georgian waste in Turkey. So he is not only condensed in Turkey, he is also opening up internationally. अब वो सिर्फ टर्की में ही नहीं काम करते हैं, बल्कि माल्टा एक अलग देश है, उस देश के भी कचरा के लिए काम कर रहे हैं, और जॉर्जिया एक अलग देश है, उस देश के लिए भी काम कर रहे हैं। So maybe in the future in India. And maybe in the future, and hopefully he will help here to pick up those waste and clean them up in Turkey and produce raw materials and help India to have a clean environment. I know it is a big issue for you. तो हो सके भविष्य में वो भारत में भी हमें कचरा चुनने का, कचरा अपने देश में कितना बड़ा समस्या है कि नहीं? कचरा जिधर भी जाइए, खासकर ईस्ट दिल्ली में देखिए तो कचरा ही कचरा रहता है। तो हो सके भविष्य में वो भारत में भी आए और हमारे साथ हमारे देश का कचरा को निपटाने में कुछ मदद करे। I think that's all. Thank you. We'll come back to you with questions if there are any. But अब मैं, मेरे दाहिने तरफ एक महानुभाव बैठे हुए हैं, महावीर सिंह।